Hello and a very warm welcome. Good evening. You're watching the Newshour special edition with me, Kritsween Walia. The last 3 days were a lot about another bout of outrage by top wrestlers of our country against the coronation of the new president of the Wrestling Federation of India. The athletes feared that the appointment of Sanjay Singh, a loyalist of Brij Bhushan Sharan Singh, would mean that the former WFI chief would continue to have some grip over the sport. But in a big turn of events, the Sports Ministry has suspended WFI's newly elected body till further orders. The new office bearers have been accused of making a hasty announcement of organizing the under-15 and under-20 nationals without following due procedure and not giving sufficient notice to wrestlers for preparation. Speaking for the first time after suspension, the man in the eye of the storm sought to distance himself from the controversy. After meeting the BJP President JP Nadda, Brij Bhushan said he will be away from the politics of the sport and focus instead on the upcoming Lok Sabha elections. संजय सिंह भुइहार बिरादरी के हैं, यानी कि मेरे वो रिश्तेदार नहीं है। अब जो भी फैसला लेना है, सरकार से बात करना है या कानूनी प्रक्रिया को अडॉप्ट करना है, ये चुने हुए जो फेडरेशन के लोग हैं वो अपना फैसला लेंगे। सरकार से बात करनी होगी या कोर्ट में जाना होगा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मैं कुश्ती से 21 दिसंबर को ही अपना नाता तोड़ चुका हूँ। वैसे तो मैं 2 बार गोंडा से रह चुका हूँ, मेरी पत्नी भी गोंडा से सांसद रह चुकी है, फिर बलरामपुर से भी हम सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार हम कैसरगंज से सांसद हैं। तो हमारी तो प्राथमिकता यही है कि हम अपने घर से लड़ें, और बाकी पार्टी की इच्छा। कौन इसमें शामिल नहीं हुआ? कांग्रेस भी शामिल हुई, टुकड़े टुकड़े गैंग भी शामिल हुई, आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, तमाम लोग हैं। क्या क्या करें, हम तो अपना झेल रहे हैं। Now, Brij Bhushan may be playing a victim of opposition's conspiracy to wash his hands off, but there are scathing indictments coming for the former federation chief from the sports ministry itself. It has said that the new body was working under the complete control of former WFI office bearers, which was not in conformity with the National Sports Code. The decision has been welcomed by the protesting wrestlers and their family. Remember, on the 21st of this month, when poll results were first announced, Sakshi Malik quit wrestling immediately. And the next very day, Bajrang Punia also returned his Padma Shri award to the government. Sakshi Malik now says that their fight was never against the government. ऑन रिटर्न नहीं आया है कि फेडरेशन रद्द हुई है या सिर्फ संजय सिंह को रद्द किया जा रहा है, तो रद्द किया गया है। लेकिन हमारी जो लड़ाई है वो सरकार से ना तो थी और ना आगे रहेगी। हमारी लड़ाई सिर्फ एक आदमी से थी, हमारी लड़ाई जो है महिलाओं के लिए थी। मैं तो संन्यास का मैंने अनाउंस किया है और बस यही चाहूँगी कि जो आने वाली बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, उनको न्याय मिले। Now that the Federation stands suspended till further orders, Sports Ministry has written to the IOA to constitute an ad hoc committee to manage day-to-day affairs of the wrestling body and will not be taking care of day-to-day activities of the wrestling. Sources say that the officials have not been terminated. However, they need to follow due process and the rules. Times Now has also learned that Sanjay Singh is planning to take legal recourse, but on camera, he called for an end to confrontation. नई फेडरेशन जो हुई है उसी दिन उनकी विदाई कर दी थी 21 तारीख को ही, और आज उन्होंने अपना बता भी दिया कि हमने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो दोनों जो जिसके ऊपर आरोप लगा था, जिसने आरोप लगाया था, दोनों लोग संन्यास ले लिए। तो अब दोनों लोग शांति से नई फेडरेशन को चलने दें। वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूं, तो मैं उनका रिश्तेदार कहां से हो जाऊंगा। On Monday, Brij Bhushan is planning to meet the Union Home Minister Amit Shah. Sources say he's likely to present his side of the story to Shah. The opposition, however, says that this action by the Sports Ministry has been taken under pressure due to wrestlers returning their medals and is nothing but a farce. The suspending of the newly formed Wrestling Federation of India Committee by the Sports Ministry is a complete farce. If they can do this, then why did they allow the elections of the WFI to take place? देखिए, यही तो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन सरकार अहंकार में थी, लेकिन जब खिलाड़ियों ने अपने पद्मश्री, अपने अवार्ड्स लौटाने शुरू किए,
तब आनंद फानन में सरकार को यह फैसला लेना पड़ा कि भाई जो संजय सिंह की नियुक्ति हुई थी उसे हम सस्पेंड करते हैं। ये जीत होती है ताकत की, लोकतंत्र की, आवाज की, एकता की, खिलाड़ियों की। Because of the pressure mounted by Bajrang Punia, Sakshi Malik, they have done it. But still the justice has not been meted to those who have been exploited by former president. So that is awaited. Unless that is done, I don't think that it is IUAS. Let's quickly open this up this evening. We have Raman Malik, BJP leader, along with the Rakesh Singh, General Secretary of Haryana Wrestling Association. Also with us is former wrestler Mukul and political analyst advocate Nikhil Jain. My first question is to Raman Malik because, you know, we just ended our explainer by talking about the host of opposition reactions, Mr. Malik. Some say that the BJP government finally succumbed to pressure and hence had to come out with the suspension order. Others say that not enough has been done. Most of them have come out to say this is farce. This is nothing but a farce because the wrestlers are still fighting for justice. They're still fighting against Brij Bhushan Sharan Singh. So my simple question to start with is, in this country, is it advocated? Is it constituted? Is it prescribed that the justice would be delivered by protest and justice would be delivered by my way or the highway philosophy? For justice to be delivered, there are certain principles, and those principles are that one, under the law, you must apply, and the body or the designated body, whether it is a quasi-judicial body or a judicial body, should get into it, educate, and then pronounce a decision. Now, whereas whether this, this election is correct or wrong, yes, legal remedies are there for everybody. Both the sides can go to the courts. The government has taken a particular stand, which I think is very much the correct stand that the government should take. It should suspend if there's any issue, and the rest has to be taken care by the honorable courts. Number one. Number two, people who have problem with such bodies did not fight elections. If they had a problem, they should have been part of the change that they inscribed to have. They cannot put guns on somebody else's shoulder and fight it. You have to stand for yourself. If you believe in the cause, a lot of people who have today come into politics, who have left their professional lives, who have left a lot of their family commitment, business commitment, we are over here because we want to change in the country, in the political system, and from Lalu to a na khane dunga, na khaunga Prime Minister, there has been a major change which has come into the Indian politics. That has come because people like us have left their professional comfort and come into the politics, and we are fighting it out. Now, my third most important point which I want to make here is, which should not be taken off, is that Brij Bhushan Sharan Singh will be adjudicated by the honorable courts on the FIR. That is one issue. The second issue is whether the body is illegitimate or legitimate. That again, after the suspension, there has to be a question asked. The question would be asked by both the sides. It would be adjudicated. Okay. No, while I agree with you, the courts will deal with the matter. But Mr. Raman Malik, what kind of a precedent is it setting that a man accused of these very serious charges, several serious allegations leveled against him, could be seen today interacting with the BJP National President JP Nadda, and thereafter comes out to say that I'm preparing for 2024 Lok Sabha elections. And here's the man that the wrestlers say must be sacked as a BJP MP. See, what BJP does and does not is not a matter of wrestling. Nobody has the right to demand what BJP does. BJP has its own conscience and would work accordingly.
Especially Congress people should not at all get into this, because they should not forget that a daughter from Amethi, Sukanya Devi, is still missing, though the cases have been hushed up in the manner that they wanted. But yes, let me also put this thing very clearly. My Honorable Prime Minister, my Home Minister, my party president, my organization secretary, they are competent people and they know the gravity and the sensitivity of this situation, and they will deal with it as required. Okay. But my question comes in here, that the most important part is, if you have accused Mr. Bhushan of doing impropriety with his position, being the president, he has done impropriety of any kind. You have put an allegation. Now that allegation has to be proven under the court of law. If it is proven, he should be punished. Okay, allegations haven't been proven as yet. But what if Brij Bhushan Sharan Singh must not be sacked as a BJP MP is what you're saying. All right. Got your point, Mr. Malik. Let's quickly also take it across to others. Mukul, would you welcome this decision today? Because immediately after 21st of December, when the election results were declared, there was a lot of anger amongst the wrestler community. We saw Sakshi Malik come out and say that she's going to quit wrestling. In fact, she has, if I may put it that way. We saw Bajrang Punia also give away his Padma Shri. We've seen those kind of reactions come in. Today, many of them have come out to say that yes, things are finally heading in the right direction. देखो मैम, अभी जो क्या नाम है उन्होंने जो डिसीजन लिया है वो क्या नाम है राइट लिया है और कुश्ती के भले के लिए लिया है। और जब तक इस चीज का पूरा निचोड़ नहीं निकल जाता, जब तक वो अपना पद्मश्री अवार्ड वापिस नहीं लेंगे। और ये जो अभी जो चुने गए थे वो आपने सबने देखा, वो उन्हीं के नाम है लोग हैं। और जब तक उन्हीं के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग जब फेडरेशन में रहेंगे, कुश्ती का आगे भला पर मुकुल जी, खेल मंत्रालय ने इसीलिए ये निर्णय लिया है, इसीलिए ये सस्पेंशन ऑर्डर्स दिए हैं, इसीलिए जो नई इलेक्टेड बॉडी है उसको सस्पेंड किया है, क्योंकि साफ तौर पे उस नोटिस में लिखा गया है कि जो पुराने ऑफिशियल बेयरर्स थे, ऑफिस बेयरर्स थे, पुराने WFI के ऑफिशियल्स थे, उनका काफी हद तक अभी भी इन्फ्लुएंस है, उनका काफी हद तक अभी भी डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूशन रहा है, इसीलिए ये निर्णय लिया गया। तो क्या ये सही दिशा में नहीं चल रहा है? फाइनली जो बहुत सारे दिक्कत रेसलर्स अपने बाहर रख रहे थे और कह रहे थे कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, बायस्ड मैनर में काफी कुछ चल रहा है WFI में, क्या आज थोड़ी शांति है कि नहीं, सब सही चल रहा है, ट्रांसपेरेंसी है, गवर्नेंस सही तरीके से चलेगी WFI में आगे आने वाले समय में? नहीं, ये तो पहली सीढ़ी है जो निलंबन किया गया है, तो बर्खास्त किया जाना चाहिए था। अभी जितनी भी जो के नाम स्टेट में जितनी भी बॉडी बनाई गई हैं, वो बॉडी सब ब्रज भूषण सिंह की बनाई हुई है, इसीलिए उनको 40 वोट पड़े हैं। और के नाम अनिता सोरान जी को 7 वोट पड़े हैं, वो भी बर्खास्त किए जाएं और दोबारा से पूरा के नाम है शुरुआत से ही इस चीज का शुरुआत करनी पड़ेगी, जब भी कुश्ती में कुछ आगे भला हो सकता है। जो आने वाली हमारी बच्चियां हैं उनका भविष्य है। अभी कुश्ती को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, नए के नाम पहलवान आएंगे, उनका भविष्य बहुत अच्छा होगा। अभी तक वो दबाव में, सारे दबाव में कुश्ती कर रहे थे, ब्लैकमेलिंग में कुश्ती कर रहे थे, और कोई मतलब अपने मनचाहे मतलब कोच के नाम रख रहे थे, अपने मनचाहे ही कैंप में रख रहे थे, पहलवानों को मनचाहे बाहर भेज रहे थे। जो उनकी बातें मानता था उन्हीं को के नाम रखते थे अपने उसमें। सारे अपने लोग इसमें फेडरेशन में, अभी जैसे ही ब्रज भूषण सिंह ने संन्यास के लिए बोला है, वो तो एक सिर्फ वैसे दिखावा के लिए बोला है। जब मंत्रालय से, जब के नाम प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से जब वहां से दबाव आया है तब ये बोला है, नहीं तो उन्हीं की ऑफिस से के नाम है ये फेडरेशन चलनी थी। वो तो कह रहे कि उनका कोई लेना देना नहीं है मुकुल, वो कह रहे उनका WFI से, जब से एक नया WFI का अध्यक्ष अपॉइंट हुआ है, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका इसकी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। जो अब नई बॉडी है, नए ऑफिशियल्स हैं, वो सारे निर्णय लेंगे आगे चलते। मालाएं जो के नाम है, सारे जो ढोल नगाड़े और आतिशबाजी उनके घर से ही शुरू हुई थी।
और वहीं से उन्होंने बोला था दबदबा है, दबदबा रहेगा, आगे भी भगवान ने दबदबा दिया है मुझे। वो आपने देखा, चैलेंज देखा उनका। और अंडर 14 की जो कुश्तियां अभी होनी थी वो नल्ली गोंडा में होनी थी। ये कई सारी चीजें देखते हुए मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। तुरंत जितने भी इन्होंने अभी फरमान जारी करे थे वो कैंसिल करे हैं और निलंबित किए हैं। इनके फेडरेशन को जो सारे चुन के आए थे इनको बर्खास्त करना चाहिए, क्योंकि अब ये कोर्ट जाएंगे, फिर उसके बाद लंबा प्रोसीजर चलेगा। जब ये के नाम है वहां से जब ये पूरे अलग हो जाएंगे फेडरेशन के जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं ब्रज भूषण शरण, ये कुश्ती को मंत्रालय का जो डिसीजन है, जो निर्णय है, आप उसको वेलकम करते हैं, आप उसका स्वागत करते हैं, पर आप ये भी चाहते हैं कि ये ज्यादा लंबा लीगली ना चले केस, कि अब नया इलेक्शन हो, अब कोई और अपॉइंट हो। काफी सारी रेसलर्स, महिला रेसलर्स आके कह रही है कि एक महिला उस टॉप पोजीशन में अब फाइनली होनी चाहिए। लेट मी गो क्रॉस टू राकेश सिंह एज वेल। राकेश सिंह जी, Mukul raised a very important point. There are pictures that we've all seen right after the election results were announced, sir. संजय सिंह को जब घोषित किया गया अध्यक्ष WFI का, तो हमने देखा कि जो ब्रिज भूषण शरण सिंह है, उनके जो पुत्र हैं, उन्होंने कौन सा बैनर उठाया हुआ था, और जो अभी हमें मुकुल भी बता रहे थे, दबदबा तो है, दबदबा तो रहेगा, ये सारे बैनर, ये सारे पोस्टर्स वो लेके खड़े थे। तो इससे हम क्या समझे? क्या दोनों क्लोजली लिंक नहीं है सर? क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह और संजय सिंह क्लोज एड्स नहीं है, लॉयलिस्ट नहीं है, दोस्त नहीं है, यार नहीं है? क्या जो कंसर्न, चिंताएं रेसलर्स की रही हैं इस अपॉइंटमेंट को लेके, क्या वो गलत है? देखिए, मुकुल जी तो कांग्रेस के जो है ना वो सिपाही हैं, और जैसे कांग्रेस की भाषा वो बोल रहे हैं। सबसे पहले अब रमन जी ने जो बात कही, कोर्ट में मैटर है, हरासमेंट का, वो ठीक है, लेकिन उसके बाद इलेक्शन जो अडहॉक कमेटी के संज्ञान में लेके और मंत्रालय ने बहुत सूझबूझ से 11 महीने का जो ग्रहण कुश्ती में था वो समाप्त हुआ, इलेक्शन हुआ, बहुत तरीके से हुआ। 40 वोट संजय सिंह को मिले, 7 वोट उस महिला खिलाड़ी को मिले। अगर कांग्रेस की बात मानते भी हैं राकेश जी, तो भी ये जो लेटर है सर, ये जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर के ऑफिस से IOA को गया है, इसमें साफ तौर पे लिखा है, और मैं बोल देती हूँ, अपने दर्शकों तक भी ये पहुंचा देती हूँ। It says, and I quote, since wrestling is an Olympic sport and WFI is an affiliate member of the Indian Olympic Association, and taking note of the compelling current situation arising out of the influence and control of the WFI's former office bearers, serious concerns have arisen about the governance and integrity of the WFI. Former officials और former office bearers की इंटरफेरेंस की बात की गई है, कंट्रोल की बात की गई है सर। देखिए, स्पोर्ट्स मंत्रालय इनको कभी भी भंग नहीं कर सकता, UWW इनको भंग कर सकता है, और ये हमारी एक्टिविटी पे ब्रेक लगाया है, ना कि WFI भंग की है। और मैं ये चाहता हूं, देश की आज जो चलती हुई कुश्ती इन्होंने रुकवाई है, जो 11 महीने तक इन्होंने कुश्ती नहीं होने दी है, बजरंग पूनिया ने, साक्षी मलिक ने जो 11 महीने से कुश्ती को रोक के रखा है, ये दुर्भाग्य है। हमारा जो कुश्ती कराने का जो हमारा मकसद था, जो बच्चा 15 साल का है वो 4-5 दिन के बाद 16वें साल में लग जाएगा, जो बच्चा 20 साल का है वो 21 साल में लग जाएगा। तालमेल में काम चल रहा है। अगर ब्रिजभूषण शरण सिंह अब WFI के प्रेसिडेंट नहीं है और संजय सिंह उनके खास यार हैं, और संजय सिंह जब अपॉइंट होते हैं WFI प्रेसिडेंट, ब्रिजभूषण शरण सिंह उनके साथ दिखते हैं, मालाएं चढ़ रही हैं उनको, साथ में पिक्चर्स ली जा रही हैं, प्रतीक भूषण सिंह बाहर आके वो बड़ा बैनर दबदबा है, दबदबा तो रहेगा, वो देखते कैप्चर किए गए हैं। तो इससे ज्यादा तो और क्या साफ हो सकता है सर कि आपस में बहुत अच्छी यारी है, इसीलिए चिंता का विषय है रेसलर्स के लिए। आज ब्रिजभूषण शरण जी ने, देखिए, उनको खुद बिल्कुल देखो, उन्होंने निंदा की इस बात की, उनको नहीं पता था इस तरह का बैनर जो उन्होंने लहराया है। वो आज ब्रिजभूषण शरण जी ने खुद बोल दिया कि कुश्ती मैंने बहुत दूर हो गया हूं मैं 21 तारीख से, मेरा कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है, जो नई संस्था बनी है वो चलाए कुश्ती को, और मैं कुश्ती के नजदीक भी नहीं हूं, मैं दूर दूर हूं। फिर उन्होंने एक लगाया कि उन्हीं के ऑफिस में है, कोठी में ऑफिस है। ये शायद मुझे लगता है कि 21 तारीख का इलेक्शन था, 22 तारीख को डिक्लेयर कर दिया, केवल ये देख के कि बच्चों का साल खराब ना हो। ऑफिस भी वहां से चेंज हो रहा है, और संजय सिंह जी
बिल्कुल अपनी जो उनकी WFI जो नई बनी है उसको बहुत सुचारू रूप से बहुत अच्छे ढंग से चलाएंगे। और लोचप जी ने ये जो पॉइंट उठाए हैं, जो मेरे को नहीं बुलाया गया, ये लोचप जी को भी मालूम होना चाहिए कि बच्चों का साल खराब, लाखों बच्चे हमारे बेचारे तरस रहे हैं 11 महीने से, उनका कोई देख रेख नहीं है, कोई संस्था उनकी देखने वाली वाली नहीं है, तो टाइम वेस्ट हो, टाइम बर्बाद हो, वो सब तो ठीक है सर, वो सब तो ठीक है, पर एक ड्यू प्रोसेस होता है, रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं। जो भी ये डिसीजन लिया गया या अनाउंसमेंट लिया गया नेशनल्स खेलने का, नेशनल्स अनाउंस करने का, सर ये तो वायलेशन में रहा है ना, क्योंकि UWW के रूल्स के हिसाब से एग्जीक्यूटिव कमेटी के मौजूदगी में ही ये डिसीजन लिया जा सकता है, और वो कमेटी भी 15 दिन से पहले नहीं बुलाई जा सकती। सर कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो बच्चों का जीवन देखना चाहिए। जो मान लीजिए हमारे 15 दिन है, 15 दिन में उन बच्चों का साल खराब हो रहा है, ये निर्णय इसलिए लिया गया कि बच्चों का साल खराब ना हो, और उन्होंने भी रोक दिया। चलती हुई कुश्ती 2 बार रुक चुकी है। ये पूरा देश, पूरे पहलवान देख रहे हैं। जो बजरंग पूनिया ने, साक्षी मलिक ने और विनेश ने कुश्ती का जो सत्यानाश किया है, आज हमारी एक बेटी केवल ओलंपिक क्वालिफाई कर गई, नहीं तो हमारे 5-5 जो पहलवान है वो ओलंपिक क्वालिफाई करते थे और मेडल के में आशा होती थी और उम्मीद होती थी। लेकिन इस 11 महीने में धरना प्रदर्शन ने बच्चों को कुश्ती से दूर कर दिया। हमारी हजारों बेटियां कुश्ती छोड़ के चली गई, और ऐसा ही ये रहा, ऐसा ही माहौल रहा, तो मुझे लगता है कि 50% लड़कियां और भी कुश्ती छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गई हैं, क्योंकि माहौल ही नहीं है। बजरंग पूनिया ने कुश्ती चलने नहीं देनी, वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। साक्षी मलिक है, कभी सोनिया गांधी से मिल रही है, कभी प्रियंका से मिल रही है। अरे भाई, तो राजनीति करो, कुश्ती को चलने दो। पॉलिटिकली मोटिवेटेड है प्रोटेस्ट। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, आप अन्य विपक्ष की पार्टियों की बात करें, सारे इस मुद्दे को लेके, इस केस को लेके, इस प्रोटेस्ट को लेके रेसलर्स के साथ जुड़े थे, और आज ब्रिज भूषण शरण सिंह ने भी आके ये बोला कि टुकड़े टुकड़े गैंग का काम है। देखो, जो राकेश जी बजरंग पूनिया के लिए बोल रहे हैं कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, ये तो हर किसी को कांग्रेस का कार्यकर्ता बता देता है, मुझे भी बता दिया। और ये खुद बीजेपी का कार्यकर्ता है, खुद ही अपनी तैयारी कर रहा है, और ये गुमराह करने की बातें करते हैं। जब दबदबा है, दबदबा रहेगा। साधु संतों के साथ वो जब नारे लगा रहा है, जो टीवी पर दिख रहा है, तो इनको बैक करके वो क्लिप दिखाई जाए राकेश जी को, क्योंकि ये कहते हैं कि कुश्ती को बर्बाद कर दिया साक्षी जी ने, बजरंग जी ने। ये ऐसे कैसे कह सकते हैं? देश का नाम किया है उन लोगों ने, देश का के नाम झंडा ऊंचा किया है। एक पहलवान 20 साल में बनता है, उसके पीछे कितना पैसा खर्च होता है, वे गरीब घर से आते हैं। अगर इनमें से कोई भी जो फेडरेशन का अध्यक्ष है, या ये खुद के नाम बोल रहे हैं, जब इन्होंने कोई पहलवान तैयार किया हो या कोई पहलवान का मेडल लवाए हो, जब तो हम मानेंगे कि देश का नाम ऊंचा करने के लिए कितनी मेहनत लगती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है। जो एलिगेशन लगाना तो 1 सेकंड का काम है। ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति कुश्ती में से निकालनी पड़ेगी। जब भी कुश्ती हमारी पाक साफ हो सकती है, उससे पहले कुश्ती हमारी पाक साफ नहीं हो सकती। ये ऐसे ही बढ़ते रहेंगे अपने पदों के लिए। ये खुद अपने पदों के लिए भिड़ रहा है, क्योंकि हरियाणा का जो अध्यक्ष है उसको भी निलंबित कर दिया गया है। अभी जो अंडर 15 की कुश्तियां हो रही थी, ये खुद अपने नाम से राकेश जी अपना लेटर निकाल रहे हैं। मतलब ये कहते हैं कि हर किसी को आने दो, हर किसी को हम देख लेंगे, अब पता लग जाएगा किस किस की कुश्ती छूटेगी और कौन कौन नेताजी के सामने आएगा। और नेताजी का एक तरफा राज चलेगा, अब हमारी चौधर चलेगी, अब कोई आके दिखाओ। तो ये तो सिर्फ धमकी देने का काम कर रहे हैं, कुश्ती चलाने का तो काम ही नहीं कर रहे हैं। पर ये धमकी नहीं चलेगी ना सर। खेल मंत्रालय ने काफी साफ कर दिया है कि ये धमकियां, ये इन्फ्लुएंस, ये कंट्रोल, ये राजनीति, ये नहीं चलेगी। निखिल जैन, टुडे shouldn't the opposition feel a little relieved that, you know, something has been done in the right direction given the concerns raised by the wrestlers, because they did indeed, apart from the allegations they were leveling against Brij Bhushan Sharan Singh and the fight for justice that continues on that end, were also objecting to Sanjay Singh taking over as the WFI chief. And today the entire newly elected body has been suspended by the sports ministry, and they've cited concerns in black and white on as to why this has happened, but the opposition has come out to call it farce. Kritsween, first of all, I hope I'll get enough time to respond to all the things that have been said Yes, on the please. show so far. Go ahead. First, to respond to your question,
I think it is a step in the right direction, but it is not at all enough. It is definitely a small win for the wrestlers of the country, for the women of the country, for the people of India. But the battle is won, but the war is still to be won. Brij Bhushan Singh continues to be an MP while 146 MPs were suspended during this session. He was the Wrestling Federation of India president until 4 days ago. His aide was the president until yesterday or today. So let's not pretend that this is a win for the wrestlers completely. What the wrestlers want is a fair inquiry into the charges that they've leveled against the man, which the government has not yet done. But yes, of course, the pressure put by the wrestlers, by the people, by the opposition has succumbed the government to suspend the new body. That is perfectly all right. And Ramanji, he said that government has suspended, so क्या ये justice deliver करने का सही तरीका है? Just because there are allegations by people, should you suspend people like that? Now, I would want to ask him, when his governments across different states go around bulldozing the houses of criminal accused without any due process of law, without any courts, does he not have the same concern? Or are these concerns of the due process of law and the rights of principles of natural justice and fundamental rights, are they only limited to people working and serving the BJP? Thirdly, Rakesh ji said that Brij Bhushan ने ये कहा है कि मैं 21 तारीख से रेसलिंग से बहुत दूर हूँ. 3 दिन पहले थी 21 तारीख. I don't understand what kind of an absurd statement that is to make. And then Rakesh ji also goes around to say that हमने बच्चों का 1 साल बर्बाद ताकि ना हो इसलिए अनाउंस करा. अगर आपको बच्चों की इतनी ही परवाह थी तो थोड़ी सेंट्रल और ज्यादा कम्यूटेबल लोकेशन में रखना चाहिए. Okay, there are two concerns raised by you, but just for a clarification before I go across to Mr. Raman Malik as well, Nikhil, he was not continuing as the WFI chief. In fact, the WFI on its whole was suspended till the elections took place and till a new chief was made. And by the way, all of that stands suspended. So that debate is settled for now. But Raman Malik, quickly respond to Nikhil Jain's concerns. His influence and his writ is what reigned paramount. His influence and writ is what reigned paramount. And that's been called out by the sports ministry. That has been called out by the sports ministry. The influence and the control which was being exercised by the former office bearers has been called out by the sports ministry. 4 months before the elections. See, Nikhil Jain is a habitual liar who comes in the disguise of a political analyst, but he's a Congress stooge. Now, let me put it very clearly. If somebody has accused, the accusation has to be verified and certified by the courts of India. That is the law of the land. You cannot be on your whims and fancies, your Antonio Minos and their children cannot be the rulers of India. Number one. Number two, please understand this. Please understand this. That let's go one by one. You cannot take away the debate. You must understand, you cannot disturb the debate always. Nikhil, you must understand this, that Sakshi Malik, if she's accused somebody, she has to go through the entire process. Same goes for Brij Bhushan. If he is found guilty, he has to be punished as per the law of the land. And that is the basic premise of justice in this country. It cannot be a banana republic of Antonio Mino. Third, most important thing, which cannot be forgotten if somebody has this problem, you have to come into the political system, fight it out. Why are you avoiding it? Bulldozing the houses of people without a trial, then... No, we are not. What is the problem in taking away? The criminals around bulldozing houses without any judicial process. What is the problem in breaking the houses? If tomorrow it is... Oh my God. See, if tomorrow the court say that Rahul Gandhi is a fraudster who's taken money away from the Congress, we will bulldoze his house. Okay, one by one. Raman Malik says, Nikhil, Raman Malik says that the decision to ensure that he's not going to continue as the WFI chief till this controversy is settled, till the investigations are over, was taken in time. But as far as his role in the BJP is concerned, that is for the BJP to decide till at least investigations conclude, till the courts decide on the case for once and for all. Nikhil. Very well, Kritsween. It's the BJP is showing to the people of the country that what kind of people and what kind of flock they want to hold together. A man who has been accused of sexual assault of minors
by multiple wrestlers. It's not just one stray allegation. It is multiple wrestlers who sat and protest on the streets for 40 days. Don't tell me this is some bogus allegation. And if indeed you are very serious about going through the judicial process, set up a fast track court. If we're just let the man be prosecuted. Let the man be tried. Let the man be tried. If we're just sticking to the realm of allegations, Nikhil Jain, let's not forget what happened with the Congress president, with the Youth Congress president, National Youth Congress president, B.V. Srinivas. Let's not forget the kind of allegations that were leveled against him, and let's not forget how the Congress was also running from pillar to post to come out in his defense. No. This is a government that is suspending opposition members of parliament for holding a placard, some people for not even being in the parliament, but yet they can't suspend their own member who's accused of sexual assault of minors. No, I'll take that across to Raman Malik, but respond to the question I just raised. Or whatever you call them. Why is the Congress not setting an example and walking the talk? No, B.V. Srinivas is not somebody against whom there were protests on the streets by women wrestlers of the country. There were not multiple. So the magnitude of protest decides how seriously those allegations should be taken? It is about the number of allegations. No, Priya, see, everybody is entitled to a judicial process. B.V. Srinivas is, as well as Brij Bhushan is, as well as those criminals or accused criminals in Uttar Pradesh and Madhya Pradesh whose houses they bulldoze. Everybody is entitled to a judicial process. We live in a country with a constitution. But the fact of the matter is that when you have so many allegations by so many public figures, the least that you can do is suspend the person. Okay, Raman Malik, let's not forget these are top wrestlers of our country, and they've brought so much pride to our nation. They've brought us so many medals. Imagine the kind of message it's sending out to the entire world on these wrestlers, these voices, these prominent figures being unheard in our country. There is another wrestler who's in serving prison, who has won medals for the country on being there with gangsters. By winning medal, does it take away the basic thing that you can do wrong or you can? If tomorrow, let's for a debate ask that if these allegations come out to be false by the Honorable Supreme Court itself, then what would happen? Then who is going to be? Are everybody who has put these allegations, whether they were part of the WFI or not, whether they were the victims or not, will they suffer? Will they face the action of the law? Will the supporters of this whole charade get into the problem? No, they will not. They will get away scot-free. This is also democracy. Okay. So one has to understand, let the justice system work, because the justice system in this country is transparent and is totally free. It is not a cage parrot. It is not something which the Gandhi family controls like the way it tried to control it in 75, 76. Now, second most important question is, Sukanya Devi was missing. The case files were made in such a manner that there was no evidence available with the court. Okay, all right. And the court now, gave a particular we're going to avoid digressing even further because there's so much we have on our plates already. I want to quickly take it across to Mukul as well. Mukul, what next for the wrestlers? Unki kya मांग रहेगी? क्या चाहेंगे अब वो? क्योंकि कईयों ने बाहर आके बोला है कि एक महिला अध्यक्ष होनी चाहिए WFI के अंदर. कईयों ने आके बोला है कि हमारी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ तो कभी थी नहीं, बस एक इंसान के साथ थी. तो अगला कदम क्या रहेगा उनका? नहीं, ये पहले से ही डिसाइड था. और जब खेल मंत्री से मिलने गए थे, जब धरना खत्म किया था, तो उन्होंने खुद ही बोला था कि एक महिला कैंडिडेट आप लेकर आओ. और वो बहुत ही बेहतरीन वो लड़की है जो कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल लेकर आई है. उन्होंने अनीता सोरान जी का नाम सजेस्ट किया. उसके बाद वहां से सारी बातें हुई. जब धरना खत्म हुआ कि अब कुश्ती सेफ है, अब आगे बच्चियों का शोषण नहीं होगा, एक फेडरेशन की जो कुश्ती फेडरेशन की अध्यक्ष एक महिला आ जाएगी, तो महिला ही कोच होंगी. और के नाम है यहीं आसपास ही कैंप लगाए जाएंगे. दूर दूर के नाम लड़कियों को नहीं जाना पड़ेगा. और के नाम सभी लड़कियां, उसके बाद उसके माँ बाप भी और भी सब सेफ थे. अभी थोड़ा सा जब दोबारा से इनको के नाम खुद फेडरेशन के अध्यक्ष बनकर बैठ गए इनका करीबी, तो उनके बाद वह फिर उन बच्चियों के माँ बाप के खौफ है. और वो बच्चियां भी खुद खौफ में है कि अभी हमने कुश्ती आगे करनी चाहिए या कुश्ती नहीं करनी चाहिए. हमारी और सबकी एक ही डिमांड है कि अभी एक महिला कुश्ती की फेडरेशन की अध्यक्ष होनी चाहिए. और उसके बाद
के नाम है कुश्ती को बिल्कुल ही अच्छे सुचारू रूप से चलेगी, बहुत अच्छे ढंग से चलेगी। सारी हमारी बच्चियां सोना लेकर आएंगी देश के लिए, वो बेखौफ होकर कुश्ती लड़ सकती हैं। अभी दबाव में ज्यादा हैं लड़कियां, कुछ लड़कियां बोल रही हैं, कुछ लड़कियां नहीं बोल रही। पहले 19 कंप्लेंट जी, तो महिला अध्यक्ष सबसे बड़ी और सबसे पहली मांग रहेगी। लेट्स सी हाउ दिस प्लेज आउट बिकॉज जेंटलमैन, लेट्स नॉट फॉरगेट this most certainly is a step in right direction. The fight is not all fought and there's lots more that's yet to unfold in days to come. Perhaps it could take months, given that, the matter is in the courts. But the government most certainly has given one example of how they're going to ensure, with regards to the controversy that has been brewing since the beginning of this year, they're going to ensure clean and smooth governance, at least in years to come and months to come when it comes to the WFI. What's happened already and whether or not more skeletons will tumble out, only the courts of the nation will be able to reveal to the countrymen. Thank you, gentlemen, for joining us this evening on